Starting today, every week we will bring to you new topics through this program on innovation and startups. Through this program, we aim to generate awareness among our students on the importance of innovation in today's society and inspire our students to convert their ideas into startups, thus achieving the goals of Atmanirbhar Bharat. We hope that our endeavor would prove to be useful to all of you. Today, we present to you two innovator students, Mr. Nandu Surendran S. and Mr. Kailash Kumar Mehra, who have achieved new heights in their endeavor for innovation, and they have set their own startups. Both of them are finalists of the National Innovation Contest 2020. The National Innovation Contest is organized by the Ministry of Education Innovation Cell every year. This year, out of several thousand students from different colleges and universities from all over India, a total of 127 students were selected for financial assistance by the ministry. And Mr. Nandu Surendran and Mr. Kailash Kumar are among them. IGNOU congratulates them and is proud of their achievement. Today, they will be interacting with all of us and will be discussing their journey of innovation. We hope after listening to them, you will be motivated to think actively in the direction of innovation. We would be taking your questions after the presentations are over. You may write your queries in the chat box so that we can ask them your questions. So before we begin the interaction with them, I would like to request the Director of the National Center for Innovation in Distance Education, Dr. Om Prakash Sharma, to tell us about the National Center for Innovation in Distance Education and its role in promoting students' innovation, and also say a few words of inspiration to our students. Dr. Sharma, please. Thank you, Dr. Momita. It's really a very good moment for all of us to be with our two very young innovators, Mr. Kailash Mehra and Nandu Surendran. First of all, I congratulate you, both of you, for making it in the final list of the National Innovation Competition 2020, organized by the Ministry of Education's Innovation Cell. Dear directors of the schools, regional directors, members of the Institution's Innovation Council, and all the participating students of IGNOU who are here with us through Zoom, YouTube, Facebook. Very good morning to all of you, and I welcome you all for this first session in this series which NCID has conceived to organize mainly on a weekly basis. We will try to make it a weekly basis so that different topics of innovation, entrepreneurship, and startups are covered, and we would like to bring the concepts and other important things to you through these sessions. So thank you very much for joining us, and I welcome you all for this very first session of the Innovators Speak being organized through Facebook as a Facebook Live on Innovation and Startup. As you know, Dr. Momita had just mentioned the Ministry of Education's Innovation Cell. They organize different kind of activities, and the Indira Gandhi National Open University, through its National Center for Innovation and Distance Education, has been very actively participating in different activities organized by the MIC, and we are encouraging our students, particularly those students who are interested in innovation, entrepreneurship, and startup, to take part in those activities. And also, many of you might be knowing that the National Center for Innovation and Distance Education has been organizing a variety of activities to promote the culture of innovation, entrepreneurship, and startup among the IGNOU students. And you might be knowing a variety of activities are organized for that purpose. For example, you know, idea competition we organized last year.
Student Innovation Award is a very regular activity every year we organize, and the purpose of that is to identify the innovator students and to support them, guide them, and nurture their idea to take it to the next level. Um, we have been organizing innovative app development competitions also. Those competitions are organized to promote our um, students to develop a new or innovative app for the society and particularly for the IGNO also. Hackathon, Toycathon, innovation contest. These are few activities which basically the ministry organizes, and we organize those activities as a feeder at the university level. And I'm happy to share with you that many of our students are very actively participating in those national level activities. Idea to Startup is a very flagship scheme of the NCID through which we identify a number of students' ideas through a variety of activities. Maybe that is the Idea to Startup, idea competition, and others. And out of those, we have identified a number of students, and those students are being nurtured, being trained, being oriented to take up their idea to the next level. And this national innovation competition organized by the Ministry of Education, that is one of those. And for that purpose, what we did, we organized a university level innovation contest first. And in that university level contest, we identified 18 teams, and those 18 ideas, prototypes, and proof of concepts, we had recommended those to the Ministry's Innovation Council. And there, I'm happy to share with you that out of thousands of students, only 127 were shortlisted at the national level, and we are proud to have our two students. They have made it their place among those 127 students out of so many institutions and universities throughout the country, where you can understand the university like providing education through open and distance education. Their students have made place, and they have competed with the institutions, universities who are working day and night in conventional mode to promote innovation entrepreneurship in their complex and campuses. In that context, it is really a very proud moment for all of us that two young innovators, Mr. Kailash and Nandu Surendran, are with us. So we thought when we are organizing this series of innovation and startup for our young students, those who are interested in taking their ideas, their innovation to the next level, we thought, why don't we invite these two students who have made us proud, share their journey, how they thought of that innovative idea, how they took it to the converting into innovation, and what kind of challenges they faced. So with these things in mind, we have planned this series. And in this series, first is this Innovators Speak, where Kailash and Nandu will be speaking. And in fact, this the format of this has been decided in a way like we will be asking them some questions. What are different problems? How they conceived their ideas? How they took it to? How NCID helped them? So these are few things. Instead of making a presentation and then after the end of their talk or interaction, we would like you to interact with them, ask your questions, so that you also get an idea how to take your concept to the to convert it into innovation entrepreneurship. And you know, the government of India is also promoting innovation entrepreneurship through variety of schemes, and they want our India, the country, to be Atmanirbhar Bharat. And this is the way where it is possible when our maximum number of students are coming up with the new ideas. They are taking help of different resources, and we are always there to help them, to guide them, to provide them training. And for that purpose, you might be knowing that the National Center for Innovation and Distance Education has set up that IGNO Udyami portal also, where we are inviting the students who are having this kind of new and innovative ideas. They want to become entrepreneur, to do startup, to do business. If those students are joining us through IGNO Udyami,
We will be providing them training, guidance, and other kind of orientation through different sessions. And in the past also, we have organized various kind of sessions for them. And we are always filtering out some of those who are really interested in converting their ideas into business startup. And with that in mind, we have initiated this series, and in the next forthcoming sessions, we will be taking up very good and useful sessions, like what is the importance of entrepreneurship, what is innovation, and how the innovation can be practiced in the life, how to take up your idea to the business, how to develop business plan, what are the different funding agencies, resources, and those all things, what are the IPR issues related to your innovation in a startup. These all aspects will be covered in the forthcoming session of this series. So I once again welcome you. And in this, at this point, I would like to thank our authorities, particularly our Honorable Vice Chancellor and students through Facebook Live, YouTube Live, and also through directly connecting through Zoom platform. And I hope that this initiative will be very useful for those students who are really interested in entrepreneurship, in setting up their startup, in doing innovation and taking up their ideas to the next level. And you know, we all are full of ideas. If those ideas are identified and nurtured timely, then I think you will be able to convert them into a good business or good innovation. So with that in mind, I once again welcome you, and I request my colleague Dr. Momita Das to take up the program further. Thank you very much and welcome you all for this program. Thank you, Dr. Sharma, for your encouraging words. So now let us start the program. I would like to present our innovator students to all of you. It gives me great pleasure to introduce Mr. Kailash Kumar Mehra. Mr. Kailash is a student of postgraduate certificate in information and assistive technologies for the instructors of visually impaired. He has designed and developed a cost-effective and innovative device named as eye rotation pendulum. This device is a manually operated device that can be moved in various directions to facilitate eye rotation exercise. For this innovation, Mr. Kailash was awarded the Student Innovation Award in the year 2019 by IGNOU. This innovation has now been selected by the Ministry National Innovation Contest. Let us know more about him and his innovation. Mr. Kailash, welcome to the session. Thank you, ma'am. Namaste to everyone. And I would like to thank all of you to inviting me here. And अभी वैसे उतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि मैं कुछ बोल सकूँ, लेकिन सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद. थैंक यू ओपी शर्मा सर, मोमिता मैम, ज्योत्सना मैम, डॉक्टर अशोक जी, डॉक्टर अभिलाष जी. थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू. एंड जी कैलाश जी, तो आप थोड़ा अपना इनोवेशन के बारे में हम सबको बताएं. जी मैम. सो बेसिकली आई एम रनिंग माय प्रेक्षा योगा सेंटर इन दिल्ली, and where we used to practice eye yoga exercises, which I specially designed to correct vision problems. So earlier, like there are many eye movement exercises which we used to practice, but all these eye yoga exercises used to be practiced by the hand or by ball. So it was very tiring and tired. So when I started the center in Delhi back in 2018, so I was doing it with the hand and ball. So when I had very few patients, so it was very convenient to do the exercise. But after a month, I received a number of students. Crowded, इतना crowded हो गया मेरे पास कि like I was doing it and मेरे दोनों हाथ jam हो गए, and I was not really doing it with my hands and ball. और वो बहुत frustrating हो गया क्योंकि आपके पास 30 बच्चे आ रहे हैं and you have to do it with all 30 students individually. So आपके हाथ tired हो जाएंगे और छोटे बच्चे हैं वो खुद कर नहीं सकते.
then I decided to do something because I was the facing problem. So if I would like to say that every problem is every problem can be a solution of something and can be a good idea to start anything. So this was the problem I faced, and उसके बाद I designed a device, और वो एक्सरसाइज की डिवाइस जो मैंने बनाई, आई डोंट हैव इमेजेस ऑफ दैट नाउ, वो मैंने एक वुड से बनाया था, लकड़ी से, वुडन बोर्ड, और उससे, और वो बन भी गई, बना लिया हमने जैसे तैसे, और उसके बाद वो बच्चों ने जो एक्सरसाइज करते थे और 3 दिन में तोड़ के साइड में कर दिया, 3 दिन में उसको ब्रेक डाउन हो गया, एंड अगेन आई हैव टू डू ऑल द एक्सरसाइज विद माई हैंड्स, तो वो बहुत टायरिंग था। देन मेरा एक इंजीनियर दोस्त है, ही केम टू विजिट मी, एंड उससे मैंने फिर डिस्कस किया, तो ये सेड कि आप इसको ऑटोमेटिक या वैसा कुछ मैनुअल एक बनाओ और उससे पॉसिबल हो सकता है। उसने मुझे कुछ इनपुट्स दिए और मैंने फिर जो है उसके साथ मिल करके मैंने वो डिवाइस का स्ट्रक्चर प्लान किया और उसको हमने बनाया, एंड इट वाज गुड। शुरू में कुछ डिफ़िकल्टीज आई और उसके बाद हमने फिर जो डिफ़िकल्टीज थी, जो प्रॉब्लम्स थी, वो एक ऑप्थोमेलोजिस्ट के फ्रेंड है मेरे, उनसे मैंने डिस्कस किया और फिर वो सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके फाइनली वो डिवाइस बनाई, और डिवाइस बना के वो फिर हमने उसका एक्सपेरिमेंट किया, तो इट वाज वर्क किया, और वो फिर जो हमारी प्रॉब्लम्स थी वो सब सॉल्व हो गई। तो हमने जी, आपने अपना इनोवेशन के बारे में बताया कि ये ऐसे आपने वो डिवाइस बनाई कि जो आई का जो मूवमेंट है, आपको जो गेज करना होता है या जांचना होता है, उसके लिए आपके लिए आसानी हो गई, इट वाज इजियर फॉर यू टू ऑपरेट। तो नेक्स्ट हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आपका मोटिवेशन कहाँ से मिला? थोड़ा तो आपने बताया, लेकिन थोड़ा विस्तार से अगर आप बता पाए कि मोटिवेशन कैसे हुआ। See, motivation was like I was the head of therapy and training division at Singhania University and Hospital Research Center. So वहाँ पे मेरा काम बच्चों को ट्रेन करना था नेचुरोपैथी एंड योगा डिवीजन में, तो आई वाज ट्रेनिंग देम। वहाँ पे मेरे पास जितने भी बच्चे आते थे उनमें से ऑलमोस्ट 40% को चश्मा लगा होता था, और वो जो प्रॉब्लम थी उसने मुझे ट्रिगर किया, एंड देन मैंने ये नेचुरल विजन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का एक प्रोजेक्ट डेवलप किया, और उसके बाद मैंने उसकी एक मार्केट रिसर्च की। मार्केट में मैंने दिल्ली के 4 स्कूलों में विजिट किया, एक साउथ दिल्ली, एक वेस्ट दिल्ली, एक नॉर्थ और ईस्ट दिल्ली, ऐसे एक स्कूल मैंने, क्योंकि आई वाज टीचिंग योगा इन स्कूल्स अर्लियर, तो वहाँ पे मैंने अपनी जो प्रॉब्लम थी उसका कि मार्केट कितना बड़ा है उसको रिसर्च किया, एंड देन आई फाउंड देयर कि जैसे असेंबली होती थी, तो मैं असेंबली में जाके वो बच्चों को काउंट कर लेता था कि कितने बच्चे चश्मा पहन के वहाँ खड़े हुए। अच्छा। तो बच्चों का परसेंटेज था दैट वाज 35%। इन फॉर 35% बच्चों को दिल्ली में चश्मा लगा हुआ था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसी को कि एक डिफरेंट एज ग्रुप में कैसे करें, देन आई डिड अ रिसर्च। पता नहीं ये वैल्यू करता भी है या नहीं। नहीं, हम आपसे आपके इनोवेशन प्रोसेस के बारे में अभी पूछेंगे, लेकिन मोटिवेशन आपका यही समझ में आ रहा है कि हाँ, आपने बच्चों को देखा, छोटे बच्चे हैं, उनको चश्मा लगा हुआ है, तो आप उनके लिए कुछ करना चाहते थे, तो शायद यही आपके अंदर से मोटिवेशन आया कि हाँ, मुझे कुछ करना है इन लोगों के लिए। जी, तो फिर उसी में मार्केट रिसर्च को मैंने एक्सटेंड किया, तो मैंने दिल्ली मेट्रो में उसका थोड़ा सा किया। सो दिल्ली मेट्रो में मैंने फिर उसको देखा कि मेट्रो में कितने लोग ट्रेवलर करते हैं जो चश्मा पहन रहे हैं, तो वहाँ पे 40% जो है बड़े लोग भी चश्मा पहन रहे हैं, एंड देन फाउंड दैट दिस कुड बी अ बिग थिंग एंड इट कुड बी अ वेरी बिग आइडिया। तो मैंने प्रॉपर प्रोजेक्ट डेवलप किया और उस पर काम करना शुरू किया। अच्छा, तो आप एक्चुअली जी हाँ, मैं आपसे पूछने ही वाली हूँ अगला सवाल प्रोसेस के बारे में। लेकिन ये आपका जो इनोवेशन है, तो ये कैसे सोसाइटी के लिए यूजफुल आपको लगता है? जी देखिए, ये जो एक्सरसाइज के डिवाइस है, ये बच्चों के लिए ही नहीं, ये सबके लिए बेटर बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर आप बात करें जैसे आफ्टर सर्टेन एज हर आदमी की आईसाइट वीक होती चली जाती है जी, एंड इन सम केसेस डॉक्टर्स के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। जैसे मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं
वो कहते हैं कि सर डॉक्टर्स को दिखाया, वी डिड ऑल चेकअप्स और वी डिडंट गेट एनीथिंग, डॉक्टर्स कह रहे हैं आपका सब कुछ ठीक है। सो कई बार क्या होता है, ऑप्टिक नर्व ड्राई हो जाती है या आपका पेरिफेरल विजन या सेंट्रल विजन वीक हो जाता है, और वो आपकी जो आईज की फंक्शनिंग है या जो सारी चीजें है वो टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल आता है, लेकिन आपको पता नहीं लगता, और वो धीरे धीरे जब बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है तब वो डिटेक्ट में आता है, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ओके, इन दोस केस ये डिवाइस बहुत 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 हेल्पफुल होगी। जैसे कुछ लोगों को एक पर्टिकुलर साइड के बाद नहीं दिखता, जैसे ज्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसका कारण तो होता है कि मैंने एक स्टडी भी पढ़ा था ये, कि पेरिफेरल विजन बहुत वीक होता है ड्राइवर्स का। अच्छा, ड्राइवर्स का पेरिफेरल विजन, पेरिफेरल मतलब साइड का विजन वीक होता है, तो वो ज्यादा चांसेस होते हैं एक्सीडेंट करने के। तो ये उन लोगों का जो पेरिफेरल विजन है वो डेवलप करता है, उसको ठीक करता है, और उसको कि आपका पहले इसमें क्या आप मेजरेबल भी कर सकते हैं कि आप जब आपने एक्सरसाइज शुरू किया था तो आपका पेरिफेरल विजन कितना था, और बाद में जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं आफ्टर 1 वीक या 2 वीक या आफ्टर अ मंथ आपका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। अच्छा, तो ये और सीनियर सिटीजन्स के लिए और भी हेल्पफुल है, क्योंकि उसमें एज ग्रुप के साथ जो है और भी सारी प्रॉब्लम जुड़ती चली जाती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, ग्लूकोमा, ये सारी प्रॉब्लम्स में, तो उनमें क्या मसल्स, आई मसल्स वीक हो जाती है, और आई मसल्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी करने का एक ही तरीका है, कोई मेडिकेशन, कोई कैप्सूल, कोई टेबलेट उसको हेल्दी या स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकता है जब तक आप आई एक्सरसाइज नहीं करोगे। तो इसलिए ये डिवाइस जो है मुझे लगता है आने वाले टाइम में बहुत हेल्पफुल होगी, और अभी रिसेंटली हमने उसका पेटेंट भी फाइल कर दिया है, और आगे वो में 4-5 एक्सरसाइज डिवाइसेस मैं और बना रहा हूँ। अच्छा, जिसके लिए मुझे आईआईटी रुड़की से निधि एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस फेलोशिप भी मिली है, तो वो डिवाइसेस मैं आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर डेवलप कर रहा हूँ, और डिवाइसेस के प्रोटोटाइप हम बना चुके हैं, 2-3 के और काम कर रहे हैं। वंडरफुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने, और मुझे लगता है कि जो हमारे श्रोता हैं या दर्शक हैं उनको ये अच्छी से तरह से समझ में आ गया होगा कि आपका डिवाइस कितना यूजफुल है सोसाइटी के लिए। तो अब आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आपने एक प्रोसेस किया, आपके इनोवेशन का एक प्रोसेस था कि पहले आपने देखा कि कितने लोग, पहले तो आपका अपना जो जॉब है या जो आपका वोकेशन है उसमें आपने ये देखा कि कितने लोग अफ्लिक्टेड हैं या कितने दे हैव दिस प्रॉब्लम, देन सो लेट अस नो अबाउट मोर अबाउट आपका जो नेक्स्ट स्टेप क्या था उसके बाद, जब आपने आइडेंटिफाई किया उसके बाद फिर डिवाइस के बारे में सोचा, तो कैसे सोचा आपने, ये प्रोसेस क्या था? जी, प्रोसेस ये था, जब मैंने ये प्रोजेक्ट डेवलप किया तो प्रोजेक्ट डेवलप करने के बाद आई अप्लाइड इट इन सम आईआईटीज एंड एनआईटीज, तो आई गॉट सेलेक्टेड फॉर आईआईटी पटना इंटरव्यू, और वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया, तो वहाँ पे पैनल में जो लोग थे, सो दे सजेस्टेड मी कि आप इसको एक प्रॉपर अच्छे से प्लान करें, इसकी मार्केट रिसर्च करें, और उसके बाद जो है सी एक्सरसाइजेस को कोई भी कॉपी कर सकता है। तो अगर मान लीजिए आप कल को मेरे पास एक्सरसाइज सीखने आते हो एंड यू कैन लर्न ऑल दीज एक्सरसाइजेस, और बिकॉज देयर आर अदर प्रोफेशनल्स आल्सो, तो आपके आइडिया को कॉपी कर सकते हैं, सो यू वोंट बी एबल टू सेव योर आइडिया, सो थिंक अबाउट समथिंग डिफरेंट व्हिच कैन सेव योर आइडिया एंड कैन प्रोटेक्ट यू, so other one or no one can copy your idea। तो वहां से ये जर्नी शुरू हुई कि मैं उन एक्सरसाइजेस को कैसे सेव कर सकता हूँ, क्योंकि एक्सरसाइजेस का हमारे यहाँ पेटेंट नहीं है, वी कैन गो फॉर पेटेंट, प्रोसेस का पेटेंट कर सकते हैं, बट एक्सरसाइजेस का पेटेंट ऑल ओवर इंडिया और या वर्ल्ड में भी कहीं नहीं है किसी कंट्री में एक्सरसाइज, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में होती है, आप उसमें कितने ही चेंजेस कर ले वो रहेगी पब्लिक डोमेन की एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइजेस का आप पेटेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने उसमें मतलब इट टुक मी ऑलमोस्ट 9 to 10 months टू थिंक अबाउट इट कि कैसे इसको मैं सेव कर सकता हूँ, और ये सिर्फ एक यही सवाल था जिसकी वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था आईआईटी पटना में फाइनल राउंड में। तो मैंने फिर 8-9 महीने लगे मुझे सोचने में कि कैसे मैं इसको सवाल को आंसर ढूंढने में, और फिर मुझे ये आइडिया आया कि अगर ये सारी एक्सरसाइजेस है उनके लिए हम एक डिवाइसेस बना दे तो डिवाइसेस का पेटेंट भी हो जाएगा और प्रोसेस का पेटेंट भी हो जाएगा।
तब मैं उसको अपने आइडिया को सेव कर सकता हूँ। तो फिर ये ऐसे शुरुआत हुई, पहले एक डिवाइस बनाई और अब जैसे आपको बता रहा हूँ कि अब मैं 4-5 डिवाइसेस पे काम कर रहा हूँ। फिर इंटीग्रेट करेंगे हम किसी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ या फिर अच्छा, के साथ। तो तो ये जी जी, तो ये जो प्रोसेस था आपका, ये तो काफी साल लगे होंगे इसको, 1 साल 2 साल, कितना टाइम लगा आपको? जी मैम, द आइडिया वाज स्टार्टेड इन बैक इन 2018 और जो डिवाइस मैंने डेवलप किया वो 2019 में बनाया। अब देखिए जो सीरीज ऑफ डिवाइसेस है वो 2021 में मैं काम कर रहा हूँ और ये पिछले लॉकडाउन हुआ था तब मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया था, क्योंकि जब आप एक काम करना शुरू करते हैं तो आप उसमें इतना इन्वॉल्व या बिजी हो जाते हैं कि आपको बाकी चीजों पे ध्यान नहीं जाता है। और जब आप खाली होते हैं देन यू हैव टू थिंक अबाउट कि आप इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे। जब पिछले साल लॉकडाउन लगा तो वो इट वाज अ लाइक गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो मैंने खाली था, कोई काम नहीं था, देन आई डिसाइडेड टू थिंक अबाउट इट कि क्या और क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और उसी में मैंने एक लेक्चर अटेंड किया था नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के डायरेक्टर है प्रोफेसर अनिल गुप्ता। तो उनका वो लेक्चर इतना हेल्पफुल रहा कि मैंने सारी एक्सरसाइजेस को रिकॉल किया और उसके बाद मैंने एक लिस्ट तैयार की कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस की डिवाइसेस इजीली बन सकती है और ईज ऑफ डूइंग हो सकता है। और फिर मैंने इस आइडिया के साथ काम किया और फिर धीरे धीरे आइडिया वो आ गया और वो मैंने डिवाइसेस पे काम करना शुरू किया और अर्निंग्स और उस सब के लिए कि कैसे मैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता हूं। तो मैंने अपना जो नेचुरल इंप्रूवमेंट प्रोग्राम था उसका फिर मैंने पिछले लॉकडाउन में 6-7 महीने काम करके मैंने सारी एक्सरसाइजेस के सेशन शूट किए और अपना एक वेब पोर्टल तैयार किया। और वेब पोर्टल तैयार करके मैंने अब पहले मैं सिर्फ दिल्ली में सर्व कर रहा था, अब हैदराबाद, बेंगलोर, वाईजैग सब जगह से लोग मेरा कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। वो नेक्स्ट ऑनलाइन कर दिया है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, कोई भी बॉम्बे या कहीं भी बैठ के किसी भी टाइम और कभी भी प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये तो कैलाश जी जी, तो ये आप जो इनोवेशन का जो प्रोसेस है इसमें कई, एक तो टाइम के लिए मैं ये कह रही थी, जो समझ आपसे बात करके जो हम लोग को निष्कर्ष निकाल, मैम आपकी आवाज ठीक से नहीं आई, आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। एक टाइम लगता ये मैम की आवाज मुझे ही नहीं आ रही है, बाकी लोगों को भी नहीं आ रही है। तो मोमिता आपकी, मोमिता जी आप सुनाई नहीं दे रही है। I think her network got dropped. I think there is some network problem. कैलाश ये तो अच्छा है कि रियली आपका जो प्रोसेस है 2018 में यू थॉट ऑफ दैट आइडिया कि आप हाथ से एक्सरसाइज कराते थे और हाथ से कराते कराते 30-35 लोगों का कराने में एक थक जाते थे। एक प्रॉब्लम आपने फेस की कि उन एक्सरसाइज के लिए क्योंकि थकान ना हो, किस तरीके से मैं कोई एक डिवाइस प्लान करूं, तो आपने वो ये कोई डिवाइस प्लान किया होगा। तो आई एम श्योर कि उस समय आपने कोई एक ऐसा तो नहीं जो आज की डेट में आपके पास जो डिवाइस है उसी तरीके का रहा होगा, क्योंकि ये तो नेचुरली जब आपने अलग अलग प्रोग्राम्स अटेंड किए, अलग अलग और प्रॉब्लम्स देखी, तो यू हैव बीन इम्प्रूविंग योर डिवाइस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये बताइए कि पहली बार जो आपने एक डिवाइस बनाया था वो कैसे बनाया, क्या वो ऐसा ही था जैसे आज है, और उसको बनाने के बाद में फिर आपने अलग अलग स्टेजेस में उसको इम्प्रूव किया, तो वो अगर कुछ स्टेजेस को अगर आप शेयर कर पाए कि इनोवेशन के फील्ड में अगर हम काम करते हैं तो इनोवेशन ऐसा नहीं कि फर्स्ट इंस्टेंस में ही वो एक फाइनल हमारा इनोवेटिव प्रोडक्ट बन जाता है। उसके लिए हमें कहीं ना कहीं एक पहला एक जीरो लेवल होगा, फिर उसके बाद कुछ और आपने प्रॉब्लम्स को देखा होगा, फीडबैक मिली होगी, उसके बाद आपने उसको फर्दर इम्प्रूव किया होगा। तो वो क्या स्टेज थी, वो कैसा डिवाइस था, फिर उसमें क्या कमियां थी, फिर उसके बाद आपने दूसरा देखा तो उसको आपने कैसे इम्प्रूव किया और क्या क्या उसमें अच्छाइयाँ थी, फिर भी क्या कमी थी, और आज की डेट में जो आपके पास डिवाइस, ये जो जर्नी है उन जर्नी में कहाँ कहाँ आपको क्या क्या जरूरत पड़ी और क्यों जरूरत पड़ी, कैसे उसको आपने
सॉल्व किया, कैसे रिजॉल्व किया, वो अगर आप ब्रीफ में शेयर करें तो वो एक इनोवेशन की एक जर्नी होगी, जो मैं चाहता हूं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं हमें और आपको, आई थिंक उनको बहुत बेनिफिट होगा कि कहीं भी आइडिया से एक इनोवेटिव प्रोडक्ट तक चलने के लिए क्या क्या डिफरेंट स्टेजेस हो सकती हैं, जो आपके एक्सपीरियंस से काइंडली शेयर दैट। जी सर, तो जैसे मैंने बताया आपको, तो सबसे पहले ये मैंने लकड़ी का बनाया था। सो लकड़ी का जो था वो बच्चों ने 3 दिन में तोड़ दिया। तो वो तो समझ में आ गया कि ये इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, और ऐसा होना चाहिए कि कम से कम बच्चे ना तोड़ पाए उसको। तो हमने फिर इसको मेटल का बनाया प्रॉपर, और मेटल वाले में प्रॉब्लम ये थी कि पहले हमने उसको जैसे, बिकॉज प्रॉब्लम शुरू में मुझे बहुत फेस हुई, क्योंकि मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, योगा, नेचुरोपैथी, अल्टरनेटिव मेडिसिन बैकग्राउंड से हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि इन चीज़ों को हम कैसे करते हैं, और बिल्कुल टेक्निकल का तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। तो फिर भी लेकिन मैंने क्या किया, जब वो लकड़ी वाला ब्रेक डाउन हो गया, तो जो मेरा इंजीनियर फ्रेंड था, मैंने उसके साथ ये आइडिया डिस्कस किया। तो उसने कहा कि ये आप इसमें एक बैरिंग्स और व्हील, ड्राइविंग व्हील की तरह वो चीजें आप यूज करोगे तो ये इजी हो जाएगा एक्सरसाइज करना। तो फिर मैंने उसको वैसे किया, वो मेटल चेंज कर दिया, और मेटल के बाद उसको व्हील और बेरिंग्स उसमें लगा दिए, तो वो इजीली रोटेट हो रहा था बहुत, और दैट वाज वेरी गुड। तो वो भी बहुत अच्छा काम किया उसने। लेकिन जब हमने 1-1.5 महीना उसका प्रैक्टिस कर लिया, यूज कर लिया, तो उसके बाद समझ में आया कि ये क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते थे तो कुछ बच्चों को कुछ सम डिग्रीज नहीं दिखाई देती थी। जो 360 डिग्री का एक सर्कल होता है वो प्रॉपर उनको नहीं दिखता था, तो पेरिफेरल विजन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते थे हम कि कितना है, किसका है। तो फिर मैंने एक अपने ऑप्टोमेट्रिस्ट फ्रेंड से, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से, उससे डिस्कस किया कि हम इसमें कैसे मेजर कर सकते हैं डिग्रीज को, ताकि हमें इम्प्रूवमेंट का भी पता लगे। तब फिर हमने उसके बैकग्राउंड के लिए एक जो 360 डिग्री का सर्कल है वो डिजाइन किया, जिससे हमें पता लग जाए कि कितना, कहाँ से किस डिग्री तक विजन था पहले जब शुरू किया, प्री और पोस्ट रिजल्ट क्या उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो वैसे वो ऐड होता चला गया, और वो ऐड हमने कर दिया, मेजरेबल इम्प्रूवमेंट उसमें पता लग गई हमें, ईज ऑफ डूइंग हो गया। और उसके बाद अब हम उसको ऑटोमेटेड बना रहे हैं। अभी तक वो मैनुअल था, तो अभी तक यू हैव टू रोटेट इट विद द हैंड्स। तो अभी आपको खुद एक्सरसाइज एक पर्टिकुलर डिग्री पे करवानी है। मैंने आपको बता दिया कि आपको ये एक्सरसाइज या ये मूवमेंट करना है, तो वो बच्चों को या पार्टिसिपेंट्स को उसी डिग्री में अपने आप उसको रोटेट करना है। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, अब हम उसको उसमें ऑटोमेशन कर रहे हैं उसका, ताकि किसी को बताना ना पड़े। उसमें एक डिस्प्ले लगा देंगे, और डिस्प्ले के साथ उसमें मूवमेंट्स फिक्स कर देंगे। जैसे फिजियोथेरेपी मशीन्स में होता है कि आपने 5 मिनट का टाइमर सेट कर दिया, और ऑटोमेटिक वो स्विच ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो उसकी स्पीड आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम उसमें स्पीड कंट्रोलर लगा रहे हैं, ऑटोमेशन कर रहे हैं उसका, ताकि जो जो एक्सरसाइजेस के मूवमेंट्स हैं वो उसमें हम डिस्प्ले में पहले ही फीड कर दें, और जिस बच्चे को जो एक्सरसाइज करवानी है वो सारी उसमें फीड करने के बाद यू जस्ट स्टार्ट द बटन, और बच्चा उसके सामने खड़ा है या बैठा है, और वो बस उसको मूवमेंट्स को, सिर्फ उसका काम बैठने का होगा, एंड ही हैज टू फॉलो द दैट डिवाइस। तो वो ऑटोमेटिक करते रहे। तो ये सब इसमें जो प्रोसेस है वो, आई थिंक मैंने एक लेक्चर अटेंड किया था प्रोफेसर अनिल गुप्ता का, तो वो जो लेक्चर था दैट वाज माइलस्टोन फॉर मी। तो प्रोफेसर अनिल गुप्ता जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं, उन्होंने उस लेक्चर में हमें बताया था कि 4 चीजें होनी चाहिए किसी भी इनोवेशन में, और वो 4 चीजें होती है, और उन 4 में से अगर आपका एक भी चीज नहीं है, आप उन 4 ऑप्शंस में से एक भी नया कर रहे हो, तो आपका आइडिया चलेगा और बहुत अच्छा चलेगा। वो 4 आइडिया थी कि आपका मटेरियल क्या है, मटेरियल के बाद मेथड क्या है, मेथड के बाद उसका यूज, एप्लीकेशन और बिजनेस मॉडल। तो प्रोफेसर गुप्ता के शब्दों में अगर मैं कहूं, तो अगर इन 4 चीजों में से कोई भी एक नई चीज आप कर रहे हो, तो आपका आइडिया चलेगा भी, आप उसका पेटेंट भी आपको मिल जाएगा, और आप उसको नए तरीके से और बेटर तरीके से कर सकते हो। तो ये एक पूरी ऐसे जर्नी रही, और उसी के बेस पे अब हमने जो बाकी डिवाइसेस प्लान किए हैं, अब हम उन पे काम कर रहे हैं। थैंक यू कैलाश, ये तो बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी है आपकी। कहाँ से आपने शुरू किया, एक वुडन
स्ट्रक्चर बनाया, उससे आज आप ऑटोमेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो रियली एक इनोवेटर के माइंडसेट में यही होना चाहिए कि हम कहाँ से स्टार्ट करके और उसको एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके ले जाएं। आपने एक जरूर ध्यान रखा कि यूजर फ्रेंडली है कि नहीं, वो स्टेबल है कि नहीं है, उसकी सस्टेनेबिलिटी कितनी है, कॉस्ट का भी आपने आई होप ध्यान रखा है, क्योंकि कॉस्ट का ध्यान रखा होगा तभी आप आज जो एक बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हैं कि दिल्ली के एक छतरपुर के सेंटर पे स्टार्ट करके नाउ यू आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। तो ये तो एक बहुत अच्छे बिजनेस पर्सन की बिजनेस मॉडल की बात है दैट यू हैव थॉट ऑफ। आई थिंक जो आज जैसे आपने कहा कि अपने जो 4 फैक्टर्स उनके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी ए सक्सेसफुल इनोवेटर एंड एंटरप्रेन्योर। सो थैंक यू जी वेरी मच फॉर दैट। डॉक्टर मोमिता, यू मे लाइक टू कंटिन्यू फर्दर, आर यू देयर विद अस? I think she still has some problem. मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मिस्टर कैलाश, जी इस सर। होल जर्नी में आपको किस किस तरीके के क्या क्या चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आए, उनको एक समराइज आप बताइए। चाहे वो आपका टेक्निकल हो या आपका प्रोडक्ट मटेरियल की अवेलेबिलिटी की बात हो या आपका जो जो फाइनेंस की बात हो या किस तरीके का जो भी आपके अलग अलग जो चैलेंजेस थे, प्रॉब्लम्स थे, और उनको आपने कैसे रिजॉल्व किया, कैसे आपने किया, सो दैट वो एक जो हमारे इनोवेटर स्टूडेंट्स हैं जिनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आ रहे होंगे होपफुली इस समय, वो सोच रहे होंगे कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, उनके आइडिया को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो अपने चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। तो आप अपना एक बताएंगे, दैट विल बी आई थिंक हेल्पफुल टू ऑल ऑफ अस। जी, सबसे बड़ा चैलेंज तो सर मेरे लिए यही रहा है कि मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे चीज़ों का पता नहीं था। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही रहा है टेक्निकल बैकग्राउंड। लेकिन जब आप एक चीज़ का आप एक डायग्राम अपने दिमाग में बना लेते हैं कि आपको ऐसा कुछ करना है, तो भले ही आपको उसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, लेकिन धीरे 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 आप उसको रिजॉल्व करते जाएंगे प्रॉब्लम्स को, और एक दिन आप उसको बना लेंगे, क्योंकि यू हैव अ पिक्चर इन योर माइंड। और जो आप सोच सकते हैं वो आप कर भी सकते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं। तो वो मैंने सोचा कि मैंने सोच लिया एक डिवाइस बनाना है, तो धीरे धीरे मैंने शुरू किया लकड़ी से, और वो सारा डिस्कस करते 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 हमने बना लिया। तो ये एक जर्नी जो है टेक्निकल बैकग्राउंड की, उसमें थोड़ा सा बीच में बनी डिस्टरबेंस, लेकिन वो मैंने मेरे सर्कल में जो टेक्निकल फ्रेंड्स थे, मैंने उनके साथ डिस्कस करके और ऑप्टोमेट्रिस्ट और उनके साथ डिस्कस करके उसको सॉल्व कर लिया। तो टेक्निकल वाला इश्यू था। और जहाँ तक बात फाइनेंशियल ट्रबल की है, तो फाइनेंशियल के लिए, क्योंकि मेरे दिमाग में पहले से क्लियर था कि अगर डिवाइस आपकी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगी तो पीपल विल नॉट बाय दैट। तो अगर वो बहुत महंगी होगी तो बहुत लिमिटेड कस्टमर हो जाएंगे। आप देखिए एप्पल का फोन इतना महंगा है, लेकिन कितने परसेंट लोग यूज करते हैं। रेडमी का फोन या एमआई का फोन इतना कॉस्ट इफेक्टिव है तो सबसे ज्यादा बिकता है। तो ये दिमाग में पहले से था, तो इसलिए ये तो क्लियर था कि पहले से इसको कॉस्ट इफेक्टिव रखना है। और अभी भी कोशिश यही है कि इसको मिनिमम बजट के साथ और कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। तो उसी पे हम काम कर रहे हैं। और जो सपोर्ट था शुरू में, जैसे टेक्निकल फ्रेंड्स ने, उसने इंजीनियर दोस्त ने साथ दे दिया, फिर डॉक्टर साहब आ गए हमारे फ्रेंड, उन्होंने हेल्प कर दिया। और अब जब सीरीज ऑफ डिवाइसेस बन रही है, तो अब तो आईआईटी रुड़की पूरा हेल्प कर रही है उसमें, वहाँ पे मेंटर्स भी हैं, दे आर प्रोवाइडिंग लैब एक्सेस ऑल्सो। और अगर ये बीच में अभी 2 महीने लॉकडाउन नहीं लगा होता तो हम डिवाइसेस बना चुके होते, क्योंकि वो लोग हमें लैब एक्सेस मिल जाती है, और लैब एक्सेस में आपके पास सारी फैसिलिटी है, तो फिर आप चीज़ों को और बेटर तरीके से कर सकते हो। तो मेंटर्स स्टेप बाय स्टेप मिलते गए, और वो मेंटर्स के साथ डिस्कस करके हम उसको सॉल्व करते गए इश्यूज को। तो ऐसे ये बनता चला गया। और प्रॉब्लम्स का तो मेरा ये मानना है कि जब आप एक डिसीजन ले लेते हैं कि आप को कुछ करना है या आप बना रहे हैं कुछ, तो फिर आप जब उस पर काम करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे वो चाहे प्रॉब्लम कैसी ही हो, तो वो धीरे धीरे सोल्व हो जाती है। अनटिल अनलेस कि आपको 2-4 करोड़ रुपया चाहिए या 10-20 लाख रुपया चाहिए, तो अगर छोटी चीजें हैं तो वो आप आराम से कर सकते हो। बहुत बड़ा अमाउंट वाली अगर कोई ऐसा इनोवेशन या वैसा स्ट्रक्चर होता है तो उसमें जरूर ज्यादा डिफिकल्टीज आती है। लेकिन छोटी मोटी के लिए तो आई थिंक इको फ्रेंडली सिस्टम है हमारे यहाँ, और धीरे धीरे और अच्छा हो ही रहा है, तो उसको हम कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही रहा सर। चलिए, ये तो बहुत अच्छा है, आपने जैसे चैलेंजेस प्रॉब्लम्स की बात की, और जो मैं समझ पा रहा हूँ और हमारे जो और बाकी स्टूडेंट्स भी समझ पा रहे होंगे कि
अगर आपका कोई आइडिया है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपकी सारी एक्सपर्टाइज आपके पास में ही हो, उसके लिए जी आपको टीम अप्रोच तो फॉलो करनी ही पड़ेगी। जैसे आपने नॉन बिल्कुल टेक्निकल होते हुए भी टेक्निकल फ्रेंड्स की, अपने नेटवर्क की सपोर्ट ली, और फिर आपने जो डिवाइस बनाया वो उसमें टेक्नोलॉजी का भी ऐसा नहीं है कि कमी रही, टेक्नोलॉजी का जी इनपुट भी दिया, और उसको आज ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं तो जरूर कोई आपके टेक्निकल टीम में होंगे। सो इट्स ए गुड दैट टू बी ए सक्सेसफुल इनोवेटर एंटरप्रेन्योर, टीम अप्रोच अगर होती है तो दैट इज यूजफुल। जो आपने कहा है, और फाइनेंस की बात, ये बात सही है कि कॉस्ट इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका कोई इनोवेशन कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, यूजर फ्रेंडली नहीं होगा, तो उसके मार्केट में सस्टेन करने के चांसेस उसके बहुत कम रहेंगे। और तीसरी बात जो आपने कही कि ऐसा नहीं कि शुरू में काम करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, आपका एक डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है कि अगर आपको कुछ करना ही है देन यू कैन डू विद लेस मनी ऑल्सो, लेस फाइनेंसेस। और हम देख रहे हैं कि अभी आपने बताया कि जो आपका एक कंटिन्यूअस एफर्ट रहा और हमेशा जो इम्प्रूव करते रहे अपने आइडिया में, इनोवेशन में, उसका एक फायदा भी हुआ कि निधि से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रही है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और तीसरा जो हमें सो एकदम से जो आज जिस वजह से हम मिले हुए हैं, नेशनल इनोवेशन कॉन्टेस्ट के जी फाइनल में होने का भी वही है, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली उस पर काम करते रहे, तभी इतने मैं देख रहा था कि 29-30,000 प्रपोजल्स में से 127, और उन 127 में भी 2 इग्नू के स्टूडेंट्स होना, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। सो जी ये हमारे बाकी स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक विल बी वेरी हेल्पफुल। मैं अभी डॉक्टर मोमिता, विल यू कंटिन्यू, आर यू देयर विद अस विद योर वॉइस? आई थिंक मैं कंटिन्यू करता हूँ। अभी जो NIC नेशनल इनोवेशन कॉन्टेस्ट में आपका जो हुआ था, उसके बारे में बताइए कि कहाँ किस तरीके से यूनिवर्सिटी इग्नू का क्या रोल रहा है उसमें, और किस तरीके से आप एक यूनिवर्सिटी लेवल कॉन्टेस्ट से लेकर के और नेशनल फाइनलिस्ट तक आप पहुंचे, उसको बहुत ब्रीफ में बताइए, क्योंकि टाइम हमारा थोड़ा सा है, जिसमें अभी हमें नंदू सुरेंद्रन के एक्सपीरियंस को भी सुनना है, एंड ही हैज आल्सो डन वेरी वंडरफुल इनोवेशन दैट इज यूजफुल फॉर दिस सोसाइटी। तो ये NIC का जो एक जर्नी है, जी कहाँ किस तरीके से यूनिवर्सिटी का क्या रोल रहा, और कहीं NCID कुड हेल्प यू इन सम वे और अदर, तो उसको अगर बताएंगे बाकी स्टूडेंट्स के लिए तो आई थिंक दैट विल बी गुड फॉर देम। जी 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 एक्चुअली जो NCID में जो मैंने अप्लाई किया था, इट वाज बाय कोइंसिडेंस। एक्चुअली हुआ ये कि जो मैं कोर्स कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन विजुअल इम्पेयरमेंट टेक्नोलॉजी में, तो उसके लिए मुझे कोई क्वेरी करनी थी, क्योंकि आई थिंक आई डिड नॉट रिसीव द बुक्स। तो उसके लिए मैं इग्नू आया था, और वहाँ पे मैंने वो एक नोटिस बोर्ड पे अबाउट द स्टूडेंट इनोवेशन अवार्ड का एक वो देखा पैम्पलेट, और मैंने उसको पढ़ा, तो दैट वाज द लास्ट डे, और लास्ट डेट था। तो मैंने फिर NCID में फ़ोन किया, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया था। तो मैंने कहा कि सर ये लास्ट डे है कि आप 1-2 दिन इसमें एक्सटेंड कर सकते हो? तो आई थिंक तो बोले कि नहीं, आज लास्ट डे है, और आप ये कर सकते हो कि अगर आप ऑनलाइन वगैरह नहीं भेज सकते, क्योंकि मैं पास में ही रहता था, इग्नू बिल्कुल पास में ही है, तो बोले कि आप अपना अपना एक एप्लीकेशन जो जो क्राइटेरिया या फॉर्मेट्स है उसमें आप फुलफिल करके आप हमारे यहाँ डाल दो, तो हम आपको ये इसमें एंट्री कर देंगे। तो मैंने फिर उस दोपहर में मुझे पता लगा, और मैंने शाम को ऑफिस से घर जाते हुए मैंने वो अपना प्रॉपर जो एप्लीकेशन था उसको ड्राफ्ट करके, और ये विद इन 2 आवर्स का काम हुआ सर। विद इन 2 आवर्स में मैंने ये सब डिजाइन किया, और वो सब फोटोग्राफ इवन नहीं थे मेरे पास, और वो कुछ भी नहीं था, वो सब मैंने बना करके 2 घंटे में, और मैंने लास्ट डे को अपना एप्लीकेशन सबमिट किया था। तो ये तो ऐसे बाई चांस मुझे पता लगा, मैं वहाँ आया, अगर नहीं आया होता तो शायद पता भी नहीं होता ना, मैं आपके साथ होता। तो वहाँ पे ये ऐसे अप्लाई किया, और फिर आफ्टर फ्यू वीक्स मुझे ईमेल आया कि आप अवार्ड के लिए सेलेक्ट हो गए हो। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने कहा चलिए, तो कुछ तो बेटर हो रहा है धीरे धीरे। तो वहाँ से जो एक एक्चुअली बिगनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी स्टार्टअप आइडिया पे या इनोवेशन पे या किसी भी प्रोडक्ट पे या बिजनेस मॉडल पे आप काम कर रहे हैं, और इन द बिगनिंग यू गेट अ लिटिल टेस्ट ऑफ सक्सेस, आपको चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, बहुत मिनिमम क्यों ना हो,
शुरुआती फेज में अगर आपको वो एक सक्सेस नसीब हो जाती है तो आपका मोटिवेशन लेवल आसमान पे होता है और आप फिर बड़े बड़े सपने देखना शुरू करते हो। तो जो बड़े बड़े सपने का जो बीजारोपण हुआ है वो इग्नू एनसीआईडी ने ही किया। अदरवाइज मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है, और या फिर डिवाइसेस का ऐसे, जैसा मैंने आपको कहा कि पटना से वहां से उन्होंने मुझे कहा कि आपको ऐसा कुछ करना होगा, देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस, और मुझे ये पेटेंट का भी नहीं पता था इनफैक्ट। तो धीरे धीरे चीज़ों का पता लगना शुरू हुआ, और फिर जब इग्नू में वहाँ आए और वो कई सारे जो इनोवेटर्स स्पीक और कई सारे मेंटरशिप सेशन हुए इग्नू में 2-3, तो वहाँ से फिर जो एक्सपर्ट पैनल्स में लोग आए हुए थे, डॉक्टर एस करदम सर थे और एक पेटेंट की मैम और थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है। तो उनसे डिस्कस करने के बाद सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे क्लियर हुई, और वहाँ से जब ये स्टूडेंट, हालांकि मैं ये मानता हूँ कि जो स्टूडेंट अवार्ड्स में प्राइज बनी थी वो बहुत कम थी सर। अगर आप, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप फैमिली के साथ बारबेक्यू में चले जाएंगे तो उससे ज़्यादा का आपका एक फैमिली का बिल आ जाता है डिनर का। तो आई थिंक इट शुड बी इंक्रीज। तो ये सॉरी बट इट शुड बी सेइंग। तो लेकिन इट वाज वेरी हेल्पफुल। तो रिकॉग्निशन जो मिलती है, प्राइज डजंट मैटर बट द रिकॉग्निशन यू गॉट, दैट मैटर्स अ लॉट। तो वहां से और जो मेंटरशिप मिला उसके बाद मैंने फिर इसको धीरे धीरे अब जैसे डेवलप किया, और वहां से जो सपोर्ट मिला, फिर मैंने इसका जो पेटेंट एप्लीकेशन है उसके बाद वो डॉक्टर करदम सर की हेल्प से ही मैंने उनसे पूछा कि कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने गाइड किया कि देखो या तो एनआरडीसी के साथ कर लो, या फिर आप खुद भी थोड़ा इसको सीख करके प्रोविजनल खुद फाइल कर सकते हो, और बाद में किसी एक्सपर्ट के साथ आप इसको प्रॉपर कंप्लीट एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके फिर कर सकते हो। तो फिर वो सारी चीज़ें जो है इग्नू और एनसीआईडी का जो बेसिक जो सीड्स जो इनोवेशन के बुए थे वो वहीं से शुरू हुआ। तो वहां से बहुत हेल्प मिली, और आपका भी मतलब सपोर्ट रहा ही है। जैसे वो मुझे चेक वाला इशू आया, तो अगर आप लोग फ्रेंडली और सपोर्टिव नहीं होते तो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक आदमी के लिए थोड़ी बैठा होता है। तो दैट वाज वेरी गुड कि आप लोगों ने उसमें भी सपोर्ट किया, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे हो गई। और बीच में मुझे मतलब बीच में एक मुझे नी इंजरी हो गई थी। नी इंजरी के बाद मुझे सर्जरी करानी पड़ी, 3 महीने में बेड पे रहा, और वो बावजूद उसके सारी चीज़ें धीरे धीरे सब सोल्व होती चली गई। तो वो मैटर ही नहीं करती है कि आपको प्रॉब्लम कितनी आती है। अगर आपने एक सॉलिड डिसीजन बना लिया कि आपको करना है, देन यू हैव टू डू इट, तो आप करते चले जाते हैं उसको। चलिए, थैंक यू कैलाश। ये तो चलो हम लोगों का इनफैक्ट पूरा यूनिवर्सिटी का एक सोच है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज हैं, कुछ करना चाहते हैं, वी वांट टू सपोर्ट देम इन ऑल वे। जहाँ भी जैसे भी हो सकता है उनको गाइड करना, हेल्प करना, ट्रेनिंग देना, उनको सही जगह पे कनेक्ट करना, ये सब हमारा एक तरीके से एक ऑब्जेक्टिव रहा है। और ये स्टूडेंट इनोवेशन अवार्ड जो शुरुआत की थी उसका एक पर्पस भी यही था, क्योंकि हमने सोचा था हमारे जो 30 लाख स्टूडेंट्स हैं उनमें से जरूर कुछ ना कुछ ऐसे जरूर होंगे जो बहुत इनोवेटिव कर रहे हैं और अपने लेवल पर कर रहे हैं, और अगर वो हमारे साथ किसी वजह से कनेक्ट हो जाते हैं तो एटलीस्ट उन्हें एक राइट काइंड ऑफ डायरेक्शन मिलेगी, सब सही गाइडेंस मिलेगी, सही जगह उनको कनेक्ट किया जा सकता है। और उसी का परिणाम ये हुआ कि आज आप हमारे साथ इनोवेशन अवार्ड के थ्रू कनेक्ट हुए, और हम लोगों ने इनोवेशन कॉन्टेस्ट के थ्रू आपको वहाँ भेजा, और नाउ यू आर देयर एट डिफरेंट लेवल, और आपके अंदर जो सीड बीजारोपण जो हुआ है वही बहुत जरूरी है। बाकी नर्चरिंग और उसकी जो खाद पानी देना वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो तो अलग जगह से भी होती है और हम लोग कर रहे हैं। तो ये है। अब फाइनली इन ब्रीफ आप ये बताइए कि जो हमारे बडिंग इनोवेटर्स हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं थ्रू डिफरेंट मोड्स, यूट्यूब और फेसबुक और जूम के थ्रू, उनको क्विक मतलब एक शॉर्ट में ये बताइए कि क्या उनको ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई आइडिया है तो उसको इनोवेशन में कन्वर्ट करने के लिए टिप्स आप देना चाहेंगे इन ब्रीफ, दैट काइंडली। जी, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, पर हाँ देखिए, अगर आपके पास एक पिक्चर है दिमाग में कि आप चाहे वो कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे वो इनोवेशन है, आइडिया है, प्रोटोटाइप है, या फिर बिजनेस मॉडल, कुछ भी जो भी आप करना चाहते हैं, आप उसका एक क्लियर पिक्चर बनाइए कि आपको करना क्या है। एटलीस्ट इन द बिगनिंग, शुरुआत में आपका अगर एक पिक्चर क्लियर होगी तो आपके लिए ईजी होगा उसको स्टार्ट करना। क्योंकि अगर शुरुआत में आप बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारेंगे और अलग अलग चीज़ों के साथ ट्राई करेंगे तो एक भी नहीं कर पाएंगे। तो एटलीस्ट
जितना ईज हो सके और जितना वो सॉलिड और सिंपल हो, उतना सिंपल उसके साथ, सिंपलिसिटी के साथ आप स्टार्ट करिए। और सबसे ज्यादा जरूरी कि अगर मान लीजिए आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट या मेंटरशिप सपोर्ट नहीं है, तो आप उसको ईज देखिए, उसका आप उसको ब्रेक डाउन कर दीजिए अपने प्रोजेक्ट को, और आप देखिए कि आप उसको कम से कम अपने लेवल पे किस हद तक शुरू कर सकते हैं। और फिर आपको जो सपोर्ट है वो भी मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप शुरू नहीं करोगे, आप अपने आइडिया को शुरू नहीं कर रहे हो, तो आप दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो आपके लिए अपना टाइम वेस्ट करके और आपके साथ आपके आइडिया विल इन्वेस्ट। तो आपको अपने ऊपर टाइम लगाना है और अपने आइडिया को स्टार्ट करना है, तो खुद के साथ शुरू करिए। और अगर चीजें नहीं आपके अनुकूल है तो आप उसको ब्रेक डाउन करते चले जाइए। जैसे अभी भी मेरा जो बिजनेस मॉडल और जो मेरा स्टार्टअप्स का जो आइडिया है, वो अभी भी जो है इवॉल्विंग प्रोसेस में है, और वो धीरे 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 डेवलप हो रहा है। तो आप शुरू करिए मिनिमम से और फिर धीरे धीरे एक्सपेंड करिए। जब आपको कुछ थोड़े थोड़े अचीवमेंट्स मिलने लगेंगे, मेंटरशिप सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, बाकी का जो इकोसिस्टम है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आता चले जाएगा। तो सबसे पहले पिक्चर क्लियर करिए, पिक्चर क्लियर करिए और उस पर खुद काम शुरू करिए। दूसरे से उम्मीद मत करिए कि वो आपको जीरो लेवल पे आपकी हेल्प करेगा। जब आप उस पर कुछ, एटलीस्ट यू हैव टू टेक अ सिंगल स्टेप, आप एक या दो स्टेप लीजिए, थोड़ा सा उस पर काम करिए, डेवलप करिए, और फिर आपको मेंटरशिप सपोर्ट हो या बाकी के सपोर्ट हो वो धीरे धीरे मिलने लगेंगे। तो यही अभी तो मैं कहना चाहूंगा, दैट्स इट, बस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आपकी, जो आपने कहा कि एकदम से बड़े ही हम बहुत बड़ा सपना देखें, लेकिन उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में ब्रेक कर लें। छोटे छोटे उसके मॉड्यूल्स बनाए कि पहला हमने ये कर लिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। तो उस तरीके से करेंगे तो हो सकता है कि बड़ा भी हम अचीव कर लेंगे। लेकिन एकदम से बड़े के लिए कोशिश करें और सोचें कि हमारे पास पैसा नहीं है, फाइनेंसेस नहीं है, सपोर्ट नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो आप एक कदम भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट ये रहा कि एक कदम तो बढ़ाइए आगे, जो अपने आप हो, अपने सेल्फ डिपेंडेंट कदम हो, वो बहुत जरूरी है। जब आपका आइडिया है तो उसके लिए बहुत ये इंतजार मत करिए कि कोई आपको आके हाथ थामेगा, ये सपोर्ट करेगा, पैसा देगा तभी आप आगे बढ़े, जैसा आपने किया है। आई थिंक वो मॉडल बहुत अच्छा है, सक्सेसफुल हो सकता है। और जब आप एक सक्सेसफुल होते हुए दिखेंगे बाकी लोगों को, तो आई थिंक दूसरे लोग हाथ बढ़ाना शुरू कर देंगे, सपोर्ट भी मिल जाएगी। और यहाँ मैं एक एश्योरेंस अपने स्टूडेंट्स को दे सकता हूँ कि इफ यू आर हैविंग सम इनोवेटिव आइडिया, गुड आइडिया, एंड यू वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, तो आप जो है जरूर उसको आगे आइए। और हम उसको इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और हमारा सेंटर, नेशनल सेंटर फॉर इनोवेशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, जरूर आपको गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे और सही डायरेक्शन देंगे। विद दैट आई थिंक आई शुड थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी, and I will request Dr. Momita Das to kindly take it up further with Nandu Surendran, if your net connectivity is okay. Dr. Momita, kindly. Dr. Momita, your voice is not, kindly unmute. I think she has some problem. Dr. Momita, are you ready? Can you take it up further or should I continue? Okay, I will continue with Mr. Nandu Surendran. Nandu, welcome to this live session with our students and IIC members and other faculty of the university who are listening or watching you live right now. And I congratulate you also for this wonderful achievement. And we are really proud of you, both of you. And you have made us very proud, entire university, that you have made it in the finalist of the National Innovation Contest, where more than 29,000 applications were received. Out of those, 2 are from IGNO, and you are one of them. So I congratulate you from my core of my heart, core of my heart. Thank you very much for joining us. And Nandu, I think you are BSc student of IGNO. Yes, sir. Yes, you are BSc student of IGNO, and you are doing your innovation also in the field of science and technology. Yes, sir. Yes, sir. Yes. I will request you to kindly share in brief about your innovation. What is that?
and how you thought of that. What was the problem you wanted to address through your innovation? Sure, sir. So my product name is called OncoSense. So OncoSense is an MRI contrast media. So simply speaking, that's a kind of a drug that you inject before taking an MRI scan. So how it works is, it's for cancer theranostics or diagnosis. So how it works is before taking an MRI, before 20 minutes before the MRI is taken, you have to inject this media. And if you take a whole body MRI, so because if you don't know whether you have cancer or not and what size tumors you have, whether your cancer is in an advanced stage, it's in metastasis. So these all things, it's actually a one solution for all these questions. So before 20 minutes, you have to inject the solution and wait for 20 minutes and take a whole body MRI. And if you have the cancer type is called adenocarcinoma, that's the cancer that we can diagnose, not almost all kind of cancer. So that will be visible on the MRI image. So the magnetic resonance image, you will see the tumors. So that's our innovation. So problem is, as I said, in India, most of the cancers are preventable. So I actually was in a clinical background. So I was studying my BDA. So I see lots of oral cancer patients. And, most of them will be in their, we call it erythroplakia. That is a white patch, red patches, not leukoplakia. So that is actually a prior stage to the cancer. But even if we advise the guys to do, further screening and all that, nobody will do that. So similarly, most of the cancer in India can be prevented, at an early stage. We can prevent the death at least. So I was thinking about a accessible solution because there are multiple solutions in developed countries, proton imaging and all these kind of things, but it's not accessible in India. So the most advanced technology we have in India is surely the MRI imaging. So I decided to work on that. So because I'm from a clinical background, I didn't have any expertise in this, as Kailash told, in the technical development. So this requires multiple streams, not just one stream. It requires nanotechnology, peptide biochemistry, clinical research. All these kind of things should be added. So I worked on that idea, and we built a prototype in 2018, mid 2018. So the prototype is still in preclinical testing. This new technique of cancer detection, basically you are developing. Yes, sir. So far we have been using MRI for that purpose, and you are giving some solution as an alternative to MRI. So MRI is not widely used for cancer diagnosis. MRI is used for certain type of cancers, like the brain cancers. So normally the only image source is either CT or MRI. Also MRI used for lobular carcinomas, like not ductal carcinomas. So lobular carcinomas are not visible in a mammogram. Mammogram is just an X-ray. It's a low dose X-ray. So MRI is not widely used even in India or across the world because MRI cannot show this kind of the tumors that is present in the organs, like in pancreas, ovary. So because MRI doesn't have any radiation, it doesn't have that side effects of CT or X-ray. So I decided to make MRI the one-stop imaging solution, cutting short the CT, cutting short the proton imaging, these X-rays. So that was the idea. So we can cut the radiation amount because for cancer patients Nandu, there should be multiple imaging. Mr. Nandu, how can you say that this technique which you have thought of or you have developed prototype is really innovative? How can you say that it is innovative, and then what are those innovative features of your this solution on the basis of which you have been selected for the National Innovation Contest? Sure, sir. So innovation is like, as I said, it's a targeted MRI contrast media. So currently there are no targeted MRI contrast media available especially for cancer. There are certain type of targeted cancers, like for liver problems, there is a targeted MRI contrast media. Also lymph node carcinomas, it's actually very rare cancer. For that also there are targeted MRI contrast media. But for these kind of adenocarcinomas, solid tumors, there are no solution nowhere in the world, not just in India. There are no solution
all over the world. So that's actually, this product is a one of a kind. So yeah, that's the innovation. So this is a one of a kind product. If suppose your innovation is successful and it is widely used, then how it will be useful for the society? Because for any innovation to be real innovative and successful, it should be widely useful for the society and the people. Sure. Then can you say something about this? Sure, sir. So if I talk about the immediate beneficiaries, the immediate beneficiaries will be the patients who can access all this kind of MRI imaging. So initially we cannot provide it like in a low cost. So initially it won't be a social innovation. To be honest, it will be purely commercial. But also speaking commercially, like for lung cancer, non-small cell lung cancer, it's very widely common in India. Like most of the Indians are at the age of 18 plus do smokes. So lung cancer is widely available, but there is no early diagnosis for lung cancer. So a patient will be diagnosed lung cancer at stage 4, when the cancer metastasizes and the symptoms are visible. So this solution, if someone is a chronic smoker or someone is working in asbestos factories or factories that can have this kind of carcinogens, at some point of time they can go to a hospital and do an MRI. So cancer develops slowly because we can identify the cancer at under 5 millimeter. To be honest, we can identify up to 3 millimeters of tumors. So these 3 millimeter tumor will take 2 or 3 years to develop into a very potent cancer. So that kind of early diagnosis will be there, and there is currently no solution. So currently the diagnosis for lung cancer is low dose CT, low dose computer tomography, and that's also done in only super specialty hospitals, because the patients will be aware of these kind of things, and he will openly say to the doctor, I am a chronic smoker, I want to do some testing for lung cancer and all that. Then only he can diagnose a lung cancer. But so as I said, this can be included in a regular checkup, body checkup, because MRI doesn't have a radiation. For prescribing CT, there should be some findings that you suspect, the patient will be having, because CT is a radiation. So that at that point of time, we can diagnose this lung cancer, ovarian cancer, even pancreatic cancer at an early stage. So currently there is no early diagnostic solution for all these kind of cancers. So it means your product will be can be used at early detection of the cancer. Yes, sir. That's the unique feature of your size, yes. Unique feature of your innovative product. That's it. It's, I think if it is developed fully, then will be a revolution in the field of cancer. It will be kind of a revolutionary. It's a very good thing. Mr. Nandu, we would like to know, because you conceived an idea like this was the problem, you thought of that cancer is detected at the very later is. By that time, it becomes very critical. So you thought of devising some method or technology which can help in early detection of the cancer. That's a fine thing. But now from that idea to the level where you are now, we would like to see what are the different stages that you have crossed, and what were the different challenges which you also faced, like Mr. Kailash. So because for all innovators, the journey is almost same. Challenges may be different. What kind of challenges you faced? What are those different stages? That we would be happy to know from you. Yes, sir. So there was a tremendous amount of challenge, because so I got this idea on 2015. So mid 2015, when I was attending an oral medicine and radiology class. So OMR we call it in the short name. So they talk about all this kind of diagnosis, early diagnosis, these kind of things. So I found that for many kind of diseases we have developed early diagnosis. So Corona came, we developed vaccines within a short period of time, right? But why cancer is there from the Neanderthals? So to be honest, if you read a book, so it mentions like the earliest evidence of cancer is found on the Neanderthals, a skeletal system called Lucy. So they have this kind of lymphoblastoma. So cancer was there so you can also find the story of Atossa. Atossa is a Persian queen. She has a breast cancer. So it's believed that the first mastectomy was performed in about 500 BC.
So cancer was still there, but at this time we are not talking about early diagnosis. We are working hard for the treatment. But the treatment for any disease, treatment can only be effective if you treat at an early stage. Whatever disease, if it's an infection, there is no point of treating a patient before septic shock, right? So a small infection can lead to septic shock and death of the patient. So any disease treated at a late stage won't yield any result. So that's that was my point. And the path was very hard because I got this idea in 2015, so I had no idea how to make it into a product, because life sciences is a very hard, very niche sector where there are very few companies who are also into cancer diagnosis. So first thing was to find my advisor. So because I am very junior, I was very junior at that time, so I need some professors who are into cancer things. So I discussed with my professors at the college. They connected me to regional cancer center at Trivandrum. That's a government-run cancer hospital. So from there they connected to the pathology department. In pathology department there were many scientists. So I discussed with them all these kind of things. So the idea took about 2 years to develop into a prototype, even in an idea stage, because it was rough idea. I just want to do something to diagnose this cancer early, and I want to use MRI. So this was the whole idea I have. I want to use the MRI, and I want to use a targeted agent. So that took me 2 years to develop into at least a prototype worth solution and all these kind of things. So from there, so in 2016, so I finalized the plan for the product. What product should be there? Then so I consulted with my friends. So when I was doing videos, my friends were doing engineering and all that. So I found Archana. So she was in SRM University doing MTech in nanotechnology. So she was into also this cancer related field, but she was an engineer. She had no idea about life sciences or medicine. So she discussed with this with me, and she said that I have this nanoparticle project, and I don't know how clinically it will be viable. So we discussed about it, and we found out that this is the solution. So I need an MRI agent, and she had that, and she doesn't know what to do with it. So we conjugated these nanoparticles, which was her MTech project, and made it into a viable cancer diagnosis solution. For that, I also asked help from University of Kerala Center in Trivandrum. So there was this peptide biochemistry department. So a department precisely related to peptide biochemistry. So we discussed with them, and they had a peptide that can target these cancer cells at an early stage, but they don't have a delivery vehicle for the peptide, right? So we have this nanoparticle, which is an iron oxide base, because it is magnetic. It will be visible on MRI, and they have a peptide that they cannot deliver, because peptide is very hard to deliver intravenously and all that. So this is kind of this come together. To be honest, it's like Paulo Coelho's quote: if you want something that bad, the whole universe will conspire to make it happen. So that's how it happened. So we registered the company in 2017, October 5th, 2017. So that was the process. From 2015, it took about 3 years to make it into a viable business solution. In 2020, we formed the company, and in 2018, we got incubated in IIM Calicut, as well as Rajiv Gandhi Center for Biotechnology, which is actually a biotechnology institute located in. It's a premier institute, one of the oldest biotechnology research centers in all of India. So they helped us to synthesize this prototype. They gave us their access to their labs. So they have this BSL-3 lab where they have lots of equipment. So using their lab, we synthesized the initial prototype. After initial synthesis in the prototype, we also carried out the cell line research in there, and we applied for a patent in December 2018. So patent was filed. Then before that, yes, one more thing, we got the initial funding in 2018 itself. It was from Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited. So that was a not an ideal funding source, because they are a petroleum company. So they are usually funding petroleum startups, but because hearing our idea and seeing our pitch, they decided to fund us. So funding was done on 2017, mid 2018, mid 2018. Then the funds followed. Then we got the funding from Kerala Startup Mission, the productization grant.
then a catalyst grant from IIT Mandi followed. So the funding source was there. So the only problem was synthesize the prototype. So the prototype synthesizing was a hard part because nothing was going as planned. It's pure technical. There is no point explaining these technical terms. Like in cell line studies there were difficulties, so we have to consult CCAM in Bangalore-based incubator. We also have to consult multiple researchers, doctors. So at least we have consulted about 50 plus scientists for making it into a prototype because that much challenge was there. So after that, thankfully, luckily, the prototype was ready, and we also tested in mice. So MRI was taken. So the final testing was in nude mice. So in nude mice, there we call it xenograft. There is a cancer cell, and we have to take an MRI of the mice. It's similarly taking an MRI of the human. We just take an MRI of the mice, and in that MRI, the cancer cell, which was in an airway stage, as I said, very, very, very small in size, was visible. So then, we decided that the solution, at least in preclinical setting, was successful. So the preclinical trials are progressing. Almost it's complete. We just have to do this entire animal studies in a GLP certified laboratory. So good laboratory practice certified. So there are a few laboratories in India. So that's the pending preclinical trials. After that, there will be clinical trials. So only these two steps are there. Before. It's a very really exciting story that you have narrated about your innovation, and I think you have registered your company also. Yes, sir. For that. And one thing I conclude from your infer from your this process explanation, that if your idea is excellent, idea is workable, then you will not get much problem in funding and in support. No, sir. To be honest, the funding part was the one that we were most scared of, because we know this requires a huge amount of funding. Till now, it's actually the expense was very huge comparing to other startups. So the funding, it came as because the idea was good. We were working on the idea. So I was spending all the money from my hands before I started the company, and I was traveling across the country, like from Delhi, Chennai, IIT Madras, CCAM Bangalore, Hyderabad Bio Incubation Center. So I was traveling around with my own money. So my parents were scared. Everyone was scared because I was spending like nothing, and nothing is happening. But as the quote in the Alchemist says, if you want something so bad, it will happen. It will just happen. The funding came. What is the status of your patent that you have filed? The patent is actually under review. So we also have filed a review for the expedited review application. So it's under the review. So we hope to the patent to be granted within couple of months if the lockdown is not there. So it should already be granted by now, but it's taking so much of time. Has IGNO helped you in some way in this whole journey? Sure, sir. So I was not aware of this MIC's National Innovation Contest at all. And I was not aware of all this kind of academic level of support that you can get. So earlier I was thinking funding was easy part, but getting into this kind of academic scientists and taking their knowledge and asking them for help was the most critical thing and most hard to do thing, because funding came from the sources that we never expected to, like the petroleum company MRPL. So then I get in touch with IGNO. So there was like you sir and Mahendra ma'am, everyone, you all are academicians and you were just supporting us and you were asking us to apply for these NICs. So because I was not aware of this kind of academic at college level contest, because I was purely into this kind of business innovations and pitching to venture capitalists and all these kind of things. But now now I have also this academic support that I never had before. While reviewing your proposal, we came to know that really it is having very bright future for your innovation that we could see, and that's why we had recommended for the NIC also, and fortunately it has been selected. And I don't know what is the meaning of that, but in the list of that NIC list, you are in the top. Yes, number one in that. I also noticed so that. I think your innovation
must have been very important for those experts also, those who have reviewed that NIC applications at the national level, National Innovation Contest applications. And hopefully there also you are likely to get some funding to take your idea, to take your prototype further. And in that context, I would like to know what kind of support or guidance you would like to have from IGNOU further in this entire endeavor. That I think that will help us in designing our future activities and planning for the students like you. So the thing is, as I said, sir, the clinical trials is a huge challenge. It's kind of a critical challenge. If something goes wrong in clinical trials, because we are a startup, there is no point of reviving the product. Like in some stages, the efficacy is not there, or the patient suddenly develops a side effects. The entire thing is gone. So the clinical trial team is kind of a very big team. So there will be multiple doctors, multiple scientists. So if we hire some CRO, contract research organization, the cost for doing a clinic, they will do everything, like from basically recruiting the patient to concluding the clinical trials, the CROs will do. That's their business, contract research organizations. And we have also contacted Jubilant Life Sciences like CROs, but the cost for a clinical trials is unthinkable. It's above 4-5 crores of Indian rupees. So if we are able to do it ourselves, we can have support in this from the hospitals like regional cancer RAIMS and all that. But we need this kind of scientist, at least, so we need a emergency physician. So physician also requires multiple. Emergency physician should be there, oncologist should be there, this anesthesia, multiple patients, because the patient should be monitored regularly. So that I can handle, but the scientists who have experience in planning the clinical trials. So the planning the clinical trials is the most important thing. There are multiple ways you can do a clinical trials, and the planning is the most important. So the entire trial progress according to the planning. So the planning of the clinical trials requires lots of inputs from scientists, from academicians, from doctors, clinicians, everyone. So for that, if we have support of IGNOU, because IGNOU is a very huge organization, huge academy. You have doctors, you have PG courses for doctors as well, MBBS doctors. So you have this kind of, expertise, you have that kind of academic experience, this kind of experts with you. So I would like to get connected to someone who are into this kind of, clinical research field. So that certainly we would be happy to help you in that context, but you kindly tell us what are those agencies or the organization, industries, or even that I have to mail you. So I will send an email once the there we would like to take up your project with them, and we will try to connect you with them, and then because your idea is wonderful and it can be very helpful in can say in revolutionizing the entire cancer detection industry. Yes. If your idea is taken up by some industry or some such kind of organization, like I think BIRAC has been providing some funding for the innovation. And yes, sir. Department of Biotechnology, they are doing. You suggest us what are those different organizations. We will try to connect you with them. Now, because you are very committed, dedicated innovator that we have seen in you, based on your experience and whatever you have done, a number of students from IGNOU, they are watching you. What would you like to guide them, suggest them to be an innovator and to take their idea to the next level, or even into the startup or entrepreneurship? That will be good for all of us.